Good afternoon, everyone. Very good afternoon. So, February week 3 का current affairs लेकर के आए हम लोग, all right? And in previous classes, actually we have started from January week 1, 2023. So, this session that will be going continuously till the current date. All right, so that will be very much helpful for any of the examinations that is going to come, that you are going to face in this 2023. All right, and as you know that I put these current affair questions uh, in a way that if some of the questions could be used in mains writing, then you can also use that section. So I put details, and I have kept those sections in Hindi as well. So if a Hindi student wants to get benefited from it, could be. All right, so okay, Anshu, good evening. Good things. Good evening, everyone. All right. So let us begin. शुरू करते हैं हम अपना, and here goes the first question. All right. Here it is. Salal Haimana area is known for. Salal Haimana क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? So answer this one. Salal Haimana area is known for. And if you could remember, we have talked about this question earlier as well. So Salal Haimana area is known for. So basically Salal Haimana, this area comes under the Resai district of J&K, Jammu and Kashmir. And now if you can recall that we have talked about that here Geological Survey of India has found 5.9 million ton deposits of lithium inferred substances. All right, so it is Geological Survey of India has discovered around 5.9 million ton lithium inferred substance. All right, so remember the name of the place. See, this question is important because it is about lithium you know, and lithium is very much useful in batteries, battery making, we know that. And these days, you know, you could see now, if you are watching IPL, you'd have continuously watching advertisement of a Tata car, है ना, electric car, electric vehicle, and electric vehicle needs to be charged. The battery needs to be charged. So lithium deposit is going to be a role play changer, है ना? It's going to be a role changer. So that is why this section is important, and the questions should be remembered in every way. So if it is Resai district, if it is Salal Haimana area in J&K, है ना, sourced by, explored by Geological Survey of India. Anyways, if it is asked, answer it. Come to the next question. Lithium, yes, J&K. Very good. Now this one is Chiranjeevi Yojana. Chiranjeevi Yojana is the flagship health scheme of which state? Andhra, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh. Chiranjeevi Yojana is the flagship health scheme of which state? Chiranjeevi Yojana. So let me tell you, Chiranjeevi Yojana का काफी विरोध हो रहा था उस स्टेट में, है ना? And that is Rajasthan actually. All right. So B, Rajasthan. So basically this Chiranjeevi Yojana, that is the part of the Rajasthan health comprehensive health state health scheme. It was actually protested by the private हेल्थ सेक्टर इंस्टीट्यूशंस. तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो इसका विरोध कर रहे थे चिरंजीवी योजना का. सो रिमेंबर दिस, चिरंजीवी योजना बिलोंग्स टू राजस्थान. ऑलराइट. अच्छा, चिरंजीवी के नाम से आपने गेस किया है ना? हाँ, तो इसीलिए मैंने ये ऑप्शन रखा भी था, और मैंने ये ऑप्शन रखा है इसलिए क्योंकि बिहार भी यही करती है और कोई भी करेगा, है ना? सो दैट इज वाई चिरंजीवी के नाम पे नहीं. चिरंजीवी हैज इट्स लिटरल मीनिंग जो कि कहता है कि लंबे समय तक. चिरंजीवी मतलब जैसे कि आपको आशीर्वाद दिया जाता है चिरंजीवी होने का, मतलब यू लिव
longer, है ना? वैसे जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, है ना? चलिए ठीक है, आइए come to the next question. What is the name of Government of India's humanitarian assistance to earthquake hit Turkey and Syria? All right. What is the name of the Government of India's humanitarian assistance to earthquake hit Turkey and Syria? So since it is a humanitarian assistance, look, since it is a humanitarian assistance and especially for earthquake disaster, the team of NDRF has been sent. Team of NDRF was sent, है ना, under the operation known as Operation Dost, है ना, Operation Dost. तो दोस्ती निभाने के लिए भेजा गया टर्की एंड सीरिया, ऑलराइट. एंड व्हेन वी से एनडीआरएफ इट मींस नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स. डिजास्टर, सो इंडिया करता है, हमेशा मदद करता है. इंडिया इज नोन फॉर हेल्पिंग एवरी नेशन, है ना. इट इज इवन ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प पाकिस्तान इफ इट वांट्स टू गेट हेल्प फ्रॉम इंडिया, है ना. India is always there. All right. Last year when Pakistan was suffering from flood, India was happy to help them. India is still wanting to help when they have Pakistan में अभी खाने को जो समस्याएं हैं in some of the areas, people do not get bread and other things. So India is still happy to help them if they want to take the help. Now come to the next one. Which among the following is true about Aero India? And थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, है ना, statements of the question, and this is going to be an important thing and you will remember it for long. Which among the following is true about Aero India? So first of all, what is this Aero India? This Aero India and 2023. So this Aero India is actually, yes, aviation exhibition, है ना. इसमें हमारे पास जितने भी अलग अलग नए, है ना, एडवांस्ड प्लेन्स, आई मीन जो फाइटर प्लेन्स, है ना, जेट्स जो भी हैं, उसको हम एग्जिबिट करते हैं. एंड यस, द फर्स्ट थिंग इज दैट यस इट इज ट्रू दैट इट इज अ बाइएनियल एयर शो. बाइएनियल एयर शो कहने का मतलब 2 साल में होता है. सो एवरी 2 years. And remember that every 2 years it happens at the same place, and that place is Yelahanka Air Force Base. Every year. So be it Aero India 2023, be it Aero India 21, be it Aero India 19, remember that you will find that it has been organized at the same place, which is Yelahanka Air Force Base. And this Yelahanka Air Force Base, where is it? It is in Bangalore. And where is Bangalore? You know that already. All right. So it is always, you know, exhibited here only. And this is also true that it is organized by the Defense Exhibition Organization. So the Defense Exhibition Organization is there, and it under the under the Ministry of Defense. So this organized the incident. All right. So this D is true here. So remember that every year Yelahanka Air Force Base, Bangalore, Karnataka. Every year, biennial air show. All right. Now come to the next one. Yes, all about. Okay. So here, again here Divya Sikarwar, and it is a proud moment for her, and I want this moment to be yours as well. So if you also want to be at her place, है ना, Unacademy has brought some very good flat 20% discount of its all courses, है ना, of BPSC subscription. So this is again a very good opportunity for you till April 14, है ना. So don't think much, go on and use the subscription, है ना. You have to just pay for just this much for these अलग-अलग courses के लिए इतना है आपको देना. And the big thing is that you can have courses in English as well as Hindi. So for English, we have launched this Achievers 2.0 69th BPSC. I am also here. Along with me, some very good faculties are here, है ना? And course price is slashed. It can be further slashed if you use the code, and the code says Rahul 01. All right. Even in Hindi,
Even in Hindi, there is this good course based on NCERT. So if you want to revise your NCERT program, you can have this just at this price 1039. You will find Abhay sir, है ना, ये सर चतुर्वेदी sir, है ना, आकृति ma'am, this sir. So everyone is here to help you out. All right. All right. Now come to the next question. ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं. Which organization called the condition of all 46 government run mental health care institutions inhuman and deplorable? Now focus on the word, and what does the word says? All 46, all जितने भी सरकारी 46 गवर्नमेंट रन सरकारी मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में, सबकी स्थिति को इनह्यूमन एंड डिप्लोरेबल कहा है, अमानवीय और निंदनीय कहा है. किसने इतनी बड़ी बात कह दी? किसने इतनी बड़ी बात कह दी? तो इतनी बड़ी बात कही गई है और किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा इतनी बड़ी बात कही गई है दैट ऑल 46 रनिंग गवर्नमेंट मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, है ना, दीज आर इनह्यूमन एंड डिप्लोरेबल कंडीशंस. सो व्हाई डिड इट से लाइक दिस? क्यों ऐसा कहा इन्होंने? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ऐसा क्यों कहा? सो देयर इज अ रीजन. इनका ये कहना है, दे सेज दैट, कि जितने भी ये, है ना, फैसिलिटीज हैं, गवर्नमेंट एंड हॉस्पिटल्स हैं, है ना, ये पेशेंट्स के ठीक हो जाने के बाद भी उनको अपने पास लंबे समय तक रख रहे हैं, एंड डू नॉट लेट देम टू गो आउट, डू नॉट लेट देम टू बी इंडिपेंडेंट, डू नॉट लेट देम टू बी गो एंड लिव इन द सोसाइटी एक्चुअली. तो ये कह रहा है कि आप उनके राइट ऑफ फ्रीडम, जो हम लोग आर्टिकल 21 के अंतर्गत कहते हैं राइट टू लाइफ, यू आर जस्ट रेस्ट्रिक्टिंग देम फ्रॉम देयर राइट टू लाइफ. सो बेसिकली दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑफ मेंटली इल पेशेंट्स. जो लोग ऐसे हैं उनको स्पेशल केयर चाहिए, आप उनको समाज से दूर ज्यादा समय तक रखोगे, विच इज नॉट गुड. सो कहने का मतलब समय हो गया, नाउ लेट देम गो एंड walk free in the society, but they are illegally keeping their patients long after the recovery, which is very inhuman. और जो ये बात कही गई है ना, ये बात उन्होंने अपने मन से नहीं कही है, they have gone through all these institutions, all right. और जो हमारे यहाँ इस तरीके के जो स्पेशल पेशेंट्स हैं, उनके लिए एक कानून है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017. तो सरकार ने इन लोगों के लिए मेंटल हेल्थ केयर एक्ट भी बनाया है ना. एंड दिस मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 जो है, इट सेज द सेम थिंग. एक्चुअली दिस एक्ट डिस्करेजेस फ्रॉम कीपिंग सच पेशेंट्स वेरी लॉन्ग टाइम अंडर दिस ऑब्जर्वेशंस आफ्टर दे हैव बीन ट्रीटेड. तो ये भी कहता है कि इतने समय तक नहीं रखना चाहिए, उसको ये डिस्करेज करता है, हतोत्साहित करता है, इवन द एक्ट ऑफ द स्टेट, है ना. And not only that, we have got other act as well, which is Persons Rights of Person with Disabilities Act 2016. It also says the same thing. So we have got two acts. The special one is MHA, Mental Health Care Act, है ना. You are not listening to this act. And not only that, there is one United Nations Convention on these persons with disabilities, है ना. एक UN का भी convention है for these persons with disabilities, and India has ratified that convention. मतलब भारत ने उसको स्वीकार किया हुआ है. Still such conditions are going on in our government run mental hospitals, which is not a good thing. This is inhuman, this is deplorable, है ना, and should be rectified as soon as possible for the well-being of these people. So अगर आप इसको use करेंगे ना, if you get any question on inclusive growth, है ना, see what happens then when comes the question of inclusive growth, when comes the question of human right, है ना, तो हम लोग आम तौर पर जो अगल बगल है उसको ही देखते हैं, एंड जिनको जरूरत है उसको हम लोग छोड़ देते हैं. So do mention this thing, है ना, with the well-being of such especially abled persons. तो उनको भी जोड़ें, जरूर जोड़ें, है ना. Your answer will be better. All right. चलिए अब अगले प्रश्न पर आइए. Why do they keep them even after recovery?
maybe they think that they are not yet ready to go, maybe they are afraid that what will happen when they go out, so maybe they do not want to take the chance actually. But if you are a hospital, if you are a doctor, you have to take the chance to see the recovery, see the impact of your uh, what treatment that you have provided, but maybe they are not taking it. So now the question is, next question, India has imposed windfall taxes on which of the following companies? And remember, this is going to be an important question. Important question. India has imposed windfall taxes on which of the following companies? किस पे windfall tax लगाया है भारत ने? Yes, very good. So these are our energies companies. ऊर्जा कंपनियों पर है ना ये windfall tax लगा हुआ है. So what is this windfall tax? So windfall tax is levied upon windfall gains. अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो उस पे आपको टैक्स देना होगा. So it is levied over, this windfall taxes are levied over windfall gains. So what is windfall gains? And especially in the case of these companies, windfall gain is in simple words, so you can say that abnormal profit. See, abnormal profit, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट से आपको क्या दिक्कत है? तो दिक्कत एबनॉर्मल प्रॉफिट से नहीं है. बाय एक्सोजीनस मींस, मतलब आपने कुछ नहीं किया. बाय एक्सोजीनस मीन मतलब क्या हुआ कि आपने ऐसा कुछ नहीं चमत्कारी कोई पॉलिसी कुछ प्रोग्राम लॉन्च कर दिया एंड यू गॉट दैट एबनॉर्मल प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द एक्सोजीनस रीजंस, है ना. मतलब उसका आपके प्रोडक्शन प्रोसेस से लेना देना नहीं है, कुछ ऐसा हो गया एंड यू हैव अर्नड सो मच. और विंडफॉल गेन एक और चीज भी कहता है, मे बी यू आर अर्निंग फ्रॉम सम unwanted things happening around. So these energy companies are earning as a result of this, है ना. Our Ministry of Finance says that these companies are earning especially after Ukraine Russia war. तो यूक्रेन रसा वॉर के चक्कर में क्या हुआ है कि प्राइसेस ऑफ पेट्रोल डीजल, है ना, अभी ये बहुत ज्यादा बढ़, इवन एयर टर्बाइन फ्यूल, है ना, एटीएफ, इवन एयर टर्बाइन फ्यूल, इनके प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गए हैं इन द ग्लोबल मार्केट. नाउ यू आर सेलिंग एंड अर्निंग मच एंड मच प्रॉफिट. सो you need to provide taxes. So how come these taxes will be helpful? So पहला चीज तो ये है कि सरकार के लिए कुछ रेवेन्यू जनरेशन हो जाएगा, है ना. तो रेवेन्यू एंड यू नो दैट आज के समय में गवर्नमेंट नीड्स रेवेन्यू. It has spent so much during COVID that it needs money. So revenue generation for government, एक चीज ये हो जाएगी. And the second thing is that it will be used as redistribution of wealth. When we say redistribution, it means कि इस तरीके से सुपर नॉर्मल एबनॉर्मल प्रॉफिट, है ना, कमाने वाली कंपनी से आप लेते हैं और उसको वेलफेयर प्रोग्राम्स पे या इकोनॉमी में स्पेंड करते हैं. सो इट विल हेल्प बोथ वेज, राइट. सो रिमेंबर दिस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लाइक योर ओएनजीसी, आईओसी. ओके, व्हाट इज योर क्वेश्चन शिक्षा? आस्क इट. What is your question, Shiksha? Ask it. Good evening, Nutan. Now come to the next question. Where was the G20 Startup 20 Engagement Group meeting organized? G20 Startup 20 Engagement Group. G20 Startup, हो सकता है एग्जाम में आपको G20 नाम नहीं ले, सीधे पूछ दे क्या स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप का मीटिंग कहां ऑर्गेनाइज किया गया. एंड व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप, व्हेन इट कम्स टू G20, है ना, आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए. व्हाई? बिकॉज इंडिया इज नाउ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, द प्रेसिडेंट ऑफ G20. और जब स्टार्टअप की बात हो तो वी आर टेकिंग दिस स्टार्टअप वेरी सीरियसली. तो इनका इंगेजमेंट ग्रुप का मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था कहां पर? हैदराबाद में. ऑलराइट, सो रिमेंबर, है ना, हैदराबाद में G20 मेंबर नेशंस जो हैं, है ना,
उनके उनके मतलब एक स्टार्टअप कैसे किया जाए, कैसे बेहतर किया जाए, इन सभी चीजों को लेकर के एक एंगेजमेंट ग्रुप हुआ था। एंड यू नो हु इज द चेयर, इनका नाम भी याद रखिएगा आप, किसका? G20 स्टार्टअप जो है, G20 स्टार्टअप इंडिया चेयर, हु इज ही? And this India chairman is, the name is Dr. Chintan Vaishnav. So remember the name, Dr. Chintan Vaishnav, because इन्होंने ही इसकी वैष्णव, है ना, इन्होंने ही ये मीटिंग की शुरुआत की। ऑलराइट, सो हैदराबाद में ये बैठक हुई। ऑलराइट, why from the energy company? So I just told you na that energy company has earned supernormal profit, taking benefit of this Russia-Ukraine war, when the global prices of the diesel, petrol and air turbine fuels has increased so much. So they earned because that external situation, external condition, external phenomenon happening in the world, which led to the surge in the oil prices. That is why we call it windfall gain, and that is why government of India has taxed. All right, chalo. Next one, Nirman She Shakti initiative is related with, निर्माण से शक्ति पहल किससे संबंधित है? निर्माण से शक्ति, निर्माण से शक्ति initiative is related with, yes, so it is related with the modernization of ESI scheme hospitals. So what is this ESI scheme hospitals? ये ESI क्या है? So this is Employees State Insurance Corporation. जो employees है ना, state insurance है ना, this is ESI. इस स्कीम के तहत they provide what? They provide some medical facilities those who are subscriber of this ESI scheme. ठीक है? So under this they are updating and modernizing these ESI scheme hospitals. Such hospitals which are under, है ना, this ESI scheme, these are modernized. How come these are modernized? So number of beds are increased, modern machines are being introduced. All right, so number of beds, bed बढ़ जाएगा, सुविधाएं बढ़ जाएंगी इन लोगों के लिए, है ना, modern machines will be there. All right, so that such employees who are है ना getting this benefit of ESI scheme will be better treated. So option C, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अस्पतालों का आधुनिकीकरण. So not only hospitals but also includes dispensaries as well. So hospitals and dispensaries. All right, now come to the next question. All right, very good. National Strategic Plan and Roadmap for Leprosy targets to achieve zero leprosy by which year? एंड ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा करेगा, दैट इज द रीजन, है ना, इस पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये. व्हाट दिस नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान एंड रोड मैप फॉर लेप्रोसी, दिस इज अ स्ट्रेटेजी रोड मैप ओवर लेप्रोसी. It targets to achieve zero leprosy by which year? And the correct answer is 2027. 2027. तो यहां पर अगर आप लोगों को जानकारी होगी तो आप कहेंगे कि भारत ने, इंडिया हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इटसेल्फ लेप्रोसी फ्री इन 2005. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अचीविंग जीरो लेप्रोसी? है ना, इंडिया हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इटसेल्फ लेप्रोसी फ्री इन 2005. तो यही तो बात है कि इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाता है ना. सो बिकॉज दिस इज सेड बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जो है ना, when she was like releasing this document, National Strategic Plan and Roadmap for Leprosy 23-27, she herself said in a written message that
though we said that we have eliminated leprosy from India in 2005, still we account for over half 52% of world's new leprosy patients. यानी कि 2005 में हमने कहा कि हमारे यहाँ लेप्रोसी नहीं है, हम लेप्रोसी फ्री हैं, yet दुनिया में जितने भी नए लेप्रोसी केसेस आ रहे हैं 52% is in India. So this is a serious thing. So that is why she said in this document, through this document, कि हम लोग 2027 तक लेप्रोसी फ्री होने का प्रयास करेंगे. तो लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग, लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग, है ना. सो दिस इज अ क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ये क्या है? बैक्टीरिया से होता है लेप्रोसी, ध्यान रखिएगा. क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जीवाणु से होता है ये, है ना. ये स्किन को परेशान कर देता है ना. नर्व्स, तो आप गांठें पड़ जाती हैं, है ना. इट हैज वेरी बैड इफेक्ट ऑन लंग्स एंड आईज, है ना. And earlier leprosy was not seen as a good thing. All right, people used to what seen as it as an untouchability thing, but you should know that it is not like that. It is not very infectious disease. Chalo, now come to the next question. Recently India launched the ICET with which nation? So what is this ICET? Initiative on critical and emerging technology. Initiative on critical and emerging technology with which nation India has launched? And the correct answer is USA, United States of America. So India and America, USA, है ना, they launched this ICET in initiative on critical and emerging technology. So what they are going to do, they are going to develop technologies together. Not only that, they are going to share some important data with each other to ensure online digital security and use technologies for further development. So ICET किसके साथ? अमेरिका के साथ भारत ने साइन किया है. Okay. Now there are some information about it because it may be asked. So India and USA, है ना, being run by the National Security Council of both countries. So दोनों ही देशों के security councils ने मिलकर के initiative launch किया है, and they have chosen 6 areas of cooperation, है ना. 6 areas of cooperation पे वो लोग काम करेंगे, that they have chosen. और यहीं पे इनकी चीजें रुक नहीं जाएंगी. They have a further plan that ये ICET initiative को वो क्वाड देशों में भी लेकर जाएंगे. Then they are planning to go to the NATO and then to the Europe and the rest of the world. All right, ठीक. So when we say quad, तो क्वाड का तो अब आप लोगों को पता ही होगा कि when we say quad, we actually want to say USA, India. So पहले इंडिया का नाम लिखते हैं, है ना. India, USA, and then comes your Japan, and then comes your Australia, है ना, under this ICET. All right, and the motive, as we have talked about, कि भाई जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी में हमें अपनी जो है डेथ एंड स्कोप जो है बायलैटरल कोऑपरेशन का वो बढ़ाना है. सप्लाई चेन हम लोग दुरुस्त करना चाहेंगे. All right, है ना. स्टार्टअप इकोसिस्टम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. स्टार्टअप को छोड़ नहीं रहे हैं, है ना. तो स्टार्टअप को छोड़ना नहीं है, स्टार्टअप को लेकर के चलना है. तो स्टार्टअप भी इसमें साथ है, साथ ही साथ जो सप्लाई चेन है उसको दुरुस्त करना है. All right, now come to the next question. Where did the 4th edition of joint military exercise, है ना, धर्म गार्डियन, take place in Feb-March 2023, है ना. फरवरी से मार्च तक चला है 2023 में धर्म गार्डियन. आई गेस, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता तो होगा, है ना, कि ये किसके बीच होता है, बट स्टिल दे शुड नो कि ये हुआ कहाँ है ना. सो ये जो है आपका एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन, ये होता है इंडिया एंड जापान के बीच में, है ना. इंडिया जापान एक्सरसाइज है ये मिलिट्री एक्सरसाइज. एंड दिस टाइम जो 4th एडिशन है इसका, जो कि फरवरी से मार्च तक चला है, दिस टाइम इट वाज, है ना, ऑर्गेनाइज्ड इन जापान. तो इस बार ये जापान में हुआ है.
So basically, if you know that Dharma Guardian happened between India and Japan, so it can be either India or Japan. So this time it is Japan. ठीक है? So this time it is Japan. Dharma Guardian याद रखेंगे, है ना? Military exercise है. Next one. What is कवच 2023? कवच 2023 क्या है? कवच. What is कवच 2023? कवच 2023 क्या है? So एक्चुअली क्या है कवच? कवच यानी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, एंड दिस सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड ओवर साइबर सिक्योरिटी. सो ये नेशनल हैकाथन है, नेशनल लेवल हैकाथन ओवर साइबर सिक्योरिटी, है ना? सो on this Kavach 2023 portal, you are invited to share your information, share your data, share your technology to do better. So this is a hackathon over cyber security. All right. See, this is Kavach 23 के वेबसाइट पे जाएंगे आप तो ये आपको लोगो मिलेगा, and Kavach is it's a unique. Now let's see here. To identify innovative concepts and technology solutions चाहिए. किस चीज के लिए solutions चाहिए? For addressing the security challenges of the 21st century, है ना? Faced by intelligence agency. So our intelligence agencies are facing so many security threats. So if you have any innovative concept, technology solution for that, go and share it, and you will win award. Prize आपको मिलेगा. So इसको लॉन्च किया गया है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है ये. MOE कहने का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय. All right, Ministry of Education. So Ministry of Education का जो है ना AICTE है. All right, and along with that, this Bureau of Police Research and Development, this comes under Ministry of Home Affairs, and Indian Cyber Crime Coordination Center I4C. I4C मतलब ये हो गया कि ICCCC मतलब साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर. तो 4C हो गया ना, दिस इज वन इंडियन. तो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है ना. दिस ऑल्सो कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मिल करके ये ऑर्गेनाइज किया. ठीक है. गृह मंत्रालय. गृह मंत्रालय क्यों? गृह मंत्रालय इसलिए क्योंकि ये जो इनलैंड सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, आपका IB हो गया, आपका है ना क्या CBI हो गया, दीज ऑल कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. इनलैंड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा, है ना. सो दिस द थिंग इज हियर मेंशन इन हिंदी, सो यू कैन मेक नोट्स ऑफ इट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ आंसर इट. Which among the following falls under India's geological heritage? निम्नलिखित में से कौन सा भारत की भूवैज्ञानिक विरासत के अंतर्गत आता है? Geological heritage. Actually, there is a draft bill sent in our parliament by Minister of Mines, जो है या Ministry of Mines, खनन मंत्रालय के द्वारा, है ना. So our Ministry of Mines has prepared this bill, है ना. जियो हेरिटेज साइट या जियो रेलिक्स बिल 2022. जियो हेरिटेज साइट या जियो रेलिक्स बिल 2022. तो इसमें इन्होंने कहा है कि हमारे जो जियोलॉजिकल हेरिटेज है उनकी रक्षा होनी चाहिए. तो जियोलॉजिकल हेरिटेज के अंतर्गत ये तीनों ही चीजें चली आती हैं. फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म, है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड नेचुरल स्ट्रक्चर्स. ऑल थ्री कम्स अंडर geological heritage. So do remember that we are trying to protect our geological heritage, and these geological heritage can be in form of fossils, can be in form of sedimentary rocks, can be in form of natural structure. All right, so be careful. Come to the next question. NICUST 2.0 portal is related with
निकुष्ट 2.0 पोर्टल किससे संबंधित है? लेप्रोसी, कैंसर, टीबी एड्स, कुष्ठ कैंसर, टीबी एड्स। तो आई थिंक दिस इज एन, ये इजी होगा। सो निकुष्ट 2.0 है ना, सो इट इज रिलेटेड विथ ए मींस लेप्रोसी। लेप्रोसी को हिंदी में कुष्ठ कहते हैं। सो ऑलराइट, ए इज द करेक्ट आंसर, निकुष्ट 2.0 portal. Alright. Now come to the next one. The special negotiating round for the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) was hosted by. Special negotiating round for the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) ये किसके द्वारा होस्ट किया गया था? So actually this was hosted by India. So this was hosted by India, है ना, in New Delhi. And now let me tell you this IPEF. ये जो आपका इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक क्या कहते हैं फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी है, फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, इसमें 14 मेंबर्स हैं, 14 मेंबर्स, एंड इट डज नॉट इंक्लूड चाइना। चाइना है क्या इसमें? सो चाइना नहीं है। तो व्हेन इट वाज लॉन्च्ड इन 2022, ये 2022 में इसको लॉन्च किया था लास्ट ईयर। दिस इज एन इनिशिएटिव बाय यूएसए। तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनके द्वारा इकोनॉमिक इनिशिएटिव है ना। सो जो चाइना जो है, चाइना ने इसका विरोध किया था आईपीईएफ का। सो इट हैज गॉट 14 मेंबर्स। सो डेट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, द 5th इंटरनेशनल मरीन प्रोटेक्टेड एरिया कांग्रेस इम्पैक्ट 5। 5th इंटरनेशनल है इसीलिए इम्पैक्ट 5 है। इंटरनेशनल मरीन प्रोटेक्टेड एरिया कांग्रेस इम्पैक्ट 5 was recently held at which place? ये कहां पर हुआ अभी हाल फिलहाल में? इम्पैक्ट 5। सो इंटरनेशनल मरीन प्रोटेक्टेड एरिया कांग्रेस है। सो फोकस ऑन दीज वर्ड्स, ये जो फ्रेज है मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, तो ये कहां पर हुआ? दिस वाज हैपन इन वैंकूवर। और वैंकूवर कहां पर है? दिस हैपेंड इन वैंकूवर। एंड वेयर इज दिस वैंकूवर? वैंकूवर कहां पर है? वैंकूवर कहां है? वैंकूवर इज इन कनाडा। सो कनाडा वैंकूवर में ये हुआ है, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट वन। नाउ व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड दिस? तो एक्चुअली नाउ लुक, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इसका ऑब्जेक्टिव ये था, ये जो अभी बैठक हुई है। अच्छा, पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये बैठक ऑर्गेनाइज कौन करता है। सो दिस कांग्रेस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय, है ना, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यू नो द नेम, रिमेंबर सब नेम आपको याद रखना चाहिए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक, IUCN, ठीक है। प्लस जिस देश में ये हो रहा है, लाइक होस्ट नेशन, तो होस्ट नेशन कौन है? So in this case, host nation is Canada. So Canada and IUCN has organized it, and objective is gap funding MPAs. Gap funding करना है, gap funding of MPAs, marine protected areas। यही आपके MPAs है, marine protected areas, इनका गैप फंडिंग करना है। सो गैप फंडिंग कहने का मतलब कि उसके लिए फंड चाहिए जो नहीं मिल रहा है, तो वो फंड इकट्ठा करना है। व्हाट आर दीज एमपीएस? एमपीए का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम एज वेल एज मेंस के लिए। सो व्हाट इज दिस कंसेप्ट ऑफ एमपीए? एमपीए क्या होता है? आपके समुद्रिक क्षेत्र के अंतर्गत एक डेजिग्नेटेड एरिया है जिसको कि आपको कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, एंड द बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम अराउंड। सो एमपीए क्या होता है? एक डेजिग्नेटेड प्लेस होता है इन ओशन, है ना, मतलब आपने उसको चूज किया है, ठीक है, डेजिग्नेटेड प्लेस इन ओशन, है ना, टू बी कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड।
जिसको कि आपको कंजर्व करके रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है, उसको हम एमपीए कहते हैं। तो वहां पर कोई भी हार्मफुल इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करनी है। यू हैव टू सेव दैट सो द बायोडाइवर्सिटी एंड द एनिमल्स लिविंग देयर एंड द फ्लोरा एंड फौना, you have to preserve and conserve everyone. So that is why the concept of MPA. And do you remember that concept of 30 by 30? 30 by 30 का concept आपको याद है? That nations should conserve, protect at least 30% of their land and ocean areas by 2030. So you can link the both. दोनों को connect कर सकते हैं, MPA and 30 by 30 target को. All right? चलो next question. आइए इस सवाल पर आइए. Which state was fined 2232 crore rupees, 2232 crore rupees by National Green Tribunal for poor waste management? तो एनजीटी ने फाइन किया किसको? एनजीटी फाइंड फॉर पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए फाइन किया है ना, किसको, किस राज्य को? एंड द करेक्ट आंसर इज योर दिल्ली. सो दिल्ली इज द करेक्ट आंसर. ऑल राइट. सो दिल्ली वाज फाइंड बाय एनजीटी, है ना. And when it comes to NGT, you should know about NGT was established under NGT Act 2016. Sorry, 2010. Under NGT Act 2010 के तहत NGT की स्थापना हुई थी. And इसका जो मेन चेयर है वो कहाँ पर है? Where does NGT sits? It chairs in New Delhi. And it has benches. इसके बेंच भारत में 4 जगह और बैठते हैं. Plus 4 benches it has. Bench समझते हैं आप? It has 4 benches in कोलकाता, भोपाल, पुणे, कोलकाता, भोपाल, पुणे एंड चेन्नई. तो 4 जगह इसका बेंच है, ध्यान रखिएगा. एंड मेन चेयर सिट्स इन न्यू दिल्ली. ऑल राइट. चलिए, सो ध्यान रखिएगा एनजीटी एक्ट 2010, जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस? आई थिंक यू वुड हैव गॉन थ्रू दिस वर्ड मेनी टाइम्स बाय नाउ इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स, है ना. सो दिस थिंग इज अंडर डिस्कशन फॉर अ लॉन्ग टाइम. And our current Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, he also had mentioned this sealed cover jurisprudence and actually taken government at hand over this issue. Sealed cover jurisprudence. What do you understand by this? So this sealed cover jurisprudence is related with the concept of document is disclosed to the judge only. और ऐसा नहीं कि ये जो सुविधा है या फिर ये जो फैसिलिटी, इट इज जस्ट नॉट फॉर द सुप्रीम कोर्ट. दिस फैसिलिटी कैन बी यूज्ड इन द हाई कोर्ट, कैन बी यूज्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एज वेल. सो व्हाट इज दिस सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस? सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत होता क्या है कि टेक फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट वांट्स टू शेयर सम डॉक्यूमेंट in a particular case, then the government does not want to reveal it or does not want to make it public, तो वो क्या करती है, डॉक्यूमेंट को सील कवर में सीधे सीधे सिर्फ सील लिफाफे में सीधे सीधे सिर्फ जज को देती है. एंड ओनली जज विल हैव द एक्सेस ऑफ इट. सो जज विल रीड द डॉक्यूमेंट एंड डिसाइड बाय इटसेल्फ दैट इफ द थिंग इज राइट और इफ द थिंग इज रॉन्ग और इफ दिस डॉक्यूमेंट इज गोइंग टू हेल्प इन एनी वे इन द केस और नॉट. So this is sealed cover jurisprudence, which gives only access of that document to the judge and the one who has presented it. तो इसका मतलब ये हो गया कि दो लोग का केस आपस में चल रहा है और मुझे पता ही नहीं है कि मेरे खिलाफ आपने क्या सबूत पेश कर दिया. आ रही बात समझ में? कि मुझ पे केस चल रहा है और मुझे पता ही नहीं है कि आपने जज को मेरे खिलाफ क्या सबूत दिया है. The simple thing is that, so it means that क्यों इसकी आलोचना कर रहे हैं सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस की? बिकॉज इट व्हाट, जो ट्रांसपेरेंसी है उस ट्रांसपेरेंसी को ही खत्म कर रहा है. सो ट्रांसपेरेंसी को खत्म कर रहा है ये. सो अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी जुडिशरी में
तो ट्रस्ट कहां से आएगा? तो इट विल रिड्यूस द ट्रस्ट दैट क्या सोच करके आपने जजमेंट दिया, आई शुड नो कि क्या डॉक्यूमेंट मेरे खिलाफ पेश किए गए, क्या प्रूफ आपने रखा है. So latestly in the event of Hindenburg case, this thing happened. Hindenburg case में अभी इस तरीके से किया सरकार ने, and then this thing came forward. और उसके पहले भी कुछ केसेस में ऐसे किए गए हैं, like Rafale case, government did that the same thing. Next one. Now come to this question. Government of India has planned to eliminate sickle cell anemia by which year? जब इस बार बजट पेश कर रही थी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, so the Minister of Finance Nirmala Sitharaman, she said that we will try to eliminate sickle cell anemia by the year 2047. D is the correct answer, है ना? तो we have planned to eliminate this sickle cell anemia. You know that sickle cell anemia? So basically your red blood cells look like this. Let me use the color. Okay. All right. So this is the normal shape, है ना? But when it is sickle celled, तो shape changes. And when the shape changes like this, it actually hinders the path of the blood flow. तो blood flow को ये blockage शुरू कर देता है. So it has very negative effect. तो negative effect है इसका. That is why हमने target किया हुआ है कि 2047 तक, है ना, we will be get over it. All right, very good, very good. 2047, very good. Now come to this question. Phase 3 सागर परिक्रमा begins from which state? सागर परिक्रमा चरण 3 किस राज्य से शुरू हुई? Phase 3 सागर परिक्रमा begins from which state? Phase 3 सागर परिक्रमा begins from which state? And it begins from Gujarat. A is the correct answer. So गुजरात में कहां से? So from Gujarat, Hazira port है. From Hazira port in Gujarat. Okay, what is this सागर परिक्रमा about? है ना, ये सागर परिक्रमा is about what? It is for to solve. सागर परिक्रमा क्यों करते हैं? To solve the grievances and challenges, है ना, of fishermen and other, है ना, in coastal areas. So coastal areas में जो fishermen हैं या जो दूसरे लोग हैं उनका कुछ समस्या है, उनके कुछ challenges हैं, it tries to solve it under Sagar Parikrama. And since this is phase 3, there must be phase 1 and phase 2. So what about them? About phase 1 and phase 2. So ज़्यादा आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. Actually, these two phases happened in 2022. Phase 1 started from Mandavi port. All right. And phase 2 from Mangrol. And both are in Gujarat. So basically, अगर ये कहा जाए कि all the 3 phases of Sagar Parikrama started from Gujarat, then you will say yes, all the 3 phases of Sagar Parikrama started from Gujarat. And why this Sagar Parikrama? This is to solve the problems, solve the challenges of the fishermen and others living in the coastal area. So is it all right, everyone? Chalo. So all right, so this is it. And okay, so before saying you Tata, see you, bye bye, let me tell you once again that this is an opportunity and do not let this opportunity go. Valid till April 14, this offer. And you know that the Unacademy on this OTT, on this online teaching edutech platform, Unacademy is the best. So why to go for anything else? A huge discount in prices, है ना? And you can get English medium batch, specially dedicated English medium batch plus courses में, है ना?
and you have got this Hindi medium batch as well. There are good teachers here. So go on and subscribe, enroll, all right? And want to get more benefits, use the code. You know the code. All right. So this is it, everyone. And thank you so much. Thank you very much. और अच्छा, अगर एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर लिया है अनअकैडमी का, तो हम लोग MCQ कर रहे हैं जो कि आपको अवेलेबल है फ्री, है ना? तो फ्री लाइव क्लासेस में यू कैन कम एंड ज्वाइन, है ना? सो टुडेज टॉपिक इज MCQ on Indian agriculture. So we for about 1 hour or 45 minutes we practice some MCQs, important MCQ, है ना? तो आज का टॉपिक इंडियन एग्रीकल्चर. सो थैंक यू वेरी मच. डू ज्वाइन at 6 p.m. sharp. And the questions जो होंगे will be in similar fashion. English, I mean Hindi and English both will be written there. All right. So thank you very much, everyone. Take care. Thank you, and see you in